Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 1st March 2023. So let's start with the news. The first news is from the economy, that is Q3 GDP growth slows to 4.4%, past data upgraded. Now Q3 इसका मतलब we are talking about the third quarter. Okay, third quarter. तो जो third quarter का मतलब हो जाता है आपका, that is the third quarter of a given financial year. So it will come like fourth quarter के पहले वाला, that is October, November, December. So यहाँ पे we are talking about October, November, December that of 2022. Fine. So यहाँ का जो थर्ड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ है, इट हैज स्लोड डाउन टू 4.4%. पास्ट डेटा हैज बीन अपग्रेडेड. तो यहाँ पे जो ये फिगर है, इट हैज बीन गिवन बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो इट इज सेइंग दैट फॉर अक्टूबर दिसंबर 2022 क्वार्टर द इंडिया जीडीपी ग्रोथ हैज स्लोड डाउन टू 4.4%. ओके, now they are saying that it was 6.3% in the second quarter of 2022-23. तो जो ग्रोथ था सेकेंड क्वार्टर में, मतलब दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उस क्वार्टर में जो ग्रोथ था इट वाज 6.3%. उसके बाद जो फुल ईयर ग्रोथ एस्टिमेट है, दैट इज फॉर ऑल द फोर क्वार्टर्स, दैट इज फुल ईयर ऑफ 2022-23, दैट हैज बीन रिटेन्ड एट 7%. ओके, बट अगर आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ फिगर इट हैज बीन रिवाइज्ड बाय 40 बेसिस पॉइंट्स हायर टू 9.1% फॉर द प्रीसीडिंग फिस्कल्स जीडीपी ग्रोथ. इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंटिन्यूइंग टू श्रिंक फॉर द सेकेंड क्वार्टर. ओके, एट अ स्लोअर पेस ऑफ 1.1% कंपेयर्ड विद क्वार्टर टू ऑफ 3.6% कॉन्ट्रैक्शन. ठीक, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो द डिप इन दिस जीडीपी फ्रॉम 6.3% to 4.4%, it is mainly because of the contraction in manufacturing sector. Right? Now the second is जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता नागेश्वरन. देखिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, दैट हु इज आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. सो आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज वी अनंता नागेश्वरन. ही इज सेइंग ये जो 4.4% जीडीपी ग्रोथ है फॉर द थर्ड क्वार्टर, इट इज बिकॉज ऑफ द रिवीजन ऑफ द जीडीपी फॉर द प्रीवियस ईयर. तो जब रिवीजन हुआ तो जीडीपी जो है वो बढ़ गई. तो जब हम पास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, तो जो क्वार्टर थ्री का जो ग्रोथ था वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है. फाइन. नाउ सी दिस इज द न्यूज अबाउट G20, दैट इज चाइना सेंडिंग फाइनेंस मिनिस्टर टू इंडिया फॉर G20 मीटिंग. इट इज द फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट इन अ ईयर. So China has announced the visit of its foreign minister King Gang to India for this week's G20 meeting. So he is visiting India for foreign ministers meeting in New Delhi starting from tomorrow, that is March 2nd. Okay, so it is the first such high profile visit from China to India in the given year. Now the next is a thumbs down for the Adopt a Heritage scheme. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, दैट इज अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम. और इस स्कीम का जो ये एडिटोरियल है वो दो चीज़ें हैं. एक तो इसके स्कीम के हाइलाइट्स बता रहा है, और हाइलाइट्स बताते बताते उसके शॉर्टकमिंग्स भी बता रहा है. ओके, एंड देन इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग सर्टन सॉल्यूशंस. फाइन, certain solutions. So this is the organization of this editorial. So if you have to understand it, so you have to understand it in this way. Now see, ये जो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है ये कोई नया स्कीम नहीं है, ये 2017 में लॉन्च हुआ था. इस स्कीम के अंदर क्या है कि दैट प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू अडॉप्ट एंड मेंटेन द स्टेट ओन्ड आर्कोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे जो टारगेट है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट बिगेन इन फरवरी and leads to adoption of 500 protected sites by August 15 and adoption of another 500 sites shortly thereafter. That is total 1000 sites is to be adopted. तो यहाँ पे ये है कि that under this scheme जो businesses हैं they can use their corporate social responsibility funds at select sites to construct and maintain ticket offices, restaurants, museums, interpretation centers, toilets, walkways, मतलब जो amenities होती हैं, ठीक है, जो एमिनिटीज़ होती हैं हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स की, वहाँ पे वो डेवलप कर सकते हैं. ओके, अलॉन्ग विद दैट दे कैन ऑल्सो इल्यूमिनेट द मॉन्यूमेंट्स, दे कैन होल्ड द कल्चरल प्रोग्राम्स, दे कैन सेट अप द गाइडेड टूर्स एक्सेट्रा. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अब नाउ द ऑथर इज सेइंग कि
that these things should be done by expert, okay, एंड नॉट बाय एनी प्राइवेट कंपनीज। तो उसके लिए वो एक एग्जांपल भी देता है कि जैसे कि एक वॉच कंपनी को एक जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात में मोरबी में टू maintain the bridge, okay, that colonial area bridge in Morbi, Gujarat, which led to tragedy in Gujarat. So here we can see that instead of giving this task out to businesses, trained professionals, okay, they should be given chance, okay, because museums जो हैं they hold our understanding of our past, okay। उसके बाद आप देखेंगे the author is saying that बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड पहले से ही है, ठीक है। तो वहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कोई बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट इज दैट इट इज़ सेइंग कि कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है उसके आसपास के जो ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसके आसपास के ग्राउंड्स पे कभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में कभी अगर एक्सकवेशंस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हमको मिल सकते हैं विच कैन गिव द ग्लिम्स इन द हिस्ट्री, ओके। बट इफ यू आर गोइंग टू गिव दिस स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड इफ दे आर गोइंग टू कम अप विद द इंफ्रास्ट्रक्चर देन दिस प्लेस अराउंड द मॉन्यूमेंट्स इट विल बी लॉस्ट। उसके बाद इट सेज दैट this scheme where businesses are involved, it will undermine local communities and their relationship with the historical sites. The next it says कि monuments का जो illumination होगा it is also troubling. Keeping these spots open from dawn to dusk has limited footfall and thus preserved them from excessive wear and tear. मतलब कि यहाँ पे क्या है कि illumination होता नहीं था, इसका मतलब कि न जो आप विजिट कर सकते हैं हिस्टोरिकल साइट्स वो मतलब डे लाइट में ही विजिट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या था कि जो वेयर एंड टेयर होता है किसी भी मॉन्यूमेंट का, क्योंकि एक तो वो बहुत पुराने होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करना होता है, ठीक है, तो जो वेयर एंड टेयर है वो कम होता है और जो हिस्टोरिकल साइट है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। बट आफ्टर द illumination what will happen is it will give fillip to night tourism which can increase the wear and tear. The second is it is saying that बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं विच हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। सम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आर अंडर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिस्ट एंड सम ऑफ देम आर अंडर द आर्कोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ द स्टेट, ओके। बट द क्वेश्चन इज कि जो इन दोनों जगह पे नहीं आते, ना ASI लिस्ट में आते हैं ना आर्कोलॉजिकल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट में आते हैं, उनका क्या होगा। जैसे कि ऑथर इज गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम उत्तर प्रदेश वेयर गवर्नमेंट हैज started turning such movements to the tourism department to convert them into hotels. जैसे यूपी में जो भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नहीं आता या ASI की लिस्ट में जो मॉन्यूमेंट्स नहीं आते उन्हें होटल्स बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा गया है चुनार फोर्ट, देन बरवा सागर लेक एंड सेवरल रेसिडेंसीज बिल्ड बाय अवध नवाब। नाउ द सेकंड इज दैट व्हाट इज द वे आउट देन, ओके। तो यहाँ पे वे आउट ये हो सकता है कि जो बिजनेसेस हैं instead of helping the monuments in this way by building the infrastructure, they can help the citizens to understand that why monuments matter. So they can spend some of their CSR fundings for research, writing and publishing high quality textbooks and developing imaginative and effective way of teaching history. उसके बाद traders and shopkeepers है, they can give funds to school libraries for collecting archival materials which includes books, maps and old photographs relevant to monuments in their vicinity. जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि there are certain leads which has been taken by Sudha Murthy and N. Narayana Murthy in giving gifts to organizations such as Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune to continue their mission of writing history by coordinating the textual record and archaeological evidence. मतलब same thing, to produce the high quality historical books which generate the interest of people in history and monuments. उसके साथ साथ अगर आप देखें तो corporates they can also fund universities to hire more professionals in humanities and social science departments. The next is, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है that industrial houses जो हैं they can support the meaningful conservation of heritage buildings by looking within. मतलब जैसे कि आप ताजमहल का केस लीजिए, because of the emission of harmful chemicals it is yellowing. तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि जो कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में they can switch to more sustainable way of production which can conserve the monuments. For example, जैसे Tata Sons, ONGC and other companies have regularly contributed funds to organizations training individuals in restoration skills and creating jobs for them. ये भी एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे that
ड्रोना फाउंडेशन है एंड सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स दैट आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम एमर्जेंट थ्रेट्स सच एज क्लाइमेट चेंज। जैसे कि महाराष्ट्र के जो सी फोर्ट्स हैं, दे हैव थ्रेट्स फ्रॉम राइजिंग सी लेवल, सैलिनेशंस, ओके ओके। देन जैसे कि अगर आप देखेंगे, हाई रेनफॉल इज लीडिंग लद्दाख स्टुक्को हाउसेज टू क्रम्बल, सो दिस ऑल कैन बी प्रिजर्व। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बॉर्डर ट्रबल्स। तो देखिए यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस, यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। So let's have this in detail. So now see, United Kingdom जो है, it consists of Great Britain and Northern Ireland, ठीक है। अब जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें क्या क्या आता है, उसमें लाइक इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है, ठीक है। So when we say Great Britain means we are talking about these three entities, and when we are talking about United Kingdom, it means it includes Great Britain plus Northern Ireland. Now जो Northern Ireland है, it is located on Irish Island, ठीक है। तो आयरिश आइलैंड में एक वी विल सी देयर आर टू थिंग्स, एक तो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है, दूसरा आपका है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रेक्सिट के बारे में। नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, फाइन। एंड सी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नाउ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, it is the part of European Union. But now after Brexit means exit of UK from European Union, now Northern Ireland is not a part of European Union, they are not a part of European Union, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि सिंस आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूके, सो देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज, जब यूके जो है जब वो ब्रेक्सिट कर रहा था, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल जो है वो यूके और ईयू के बीच में फाइनलाइज हुआ था, विच इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, विच इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ओके। अब इस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंदर क्या था, ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंदर ये था कि नॉर्दर्न आयरलैंड विल स्टिल फॉलो द ईयू कस्टम्स रूल, it will still follow the EU customs rule, fine. But Northern Ireland is the part of United Kingdom, and United Kingdom is not a part of EU. So many political parties in Northern Ireland, they protested against the Northern Ireland Protocol, fine. Now there has been a new thing which has come up to solve this problem, that is called as Windsor Agreement, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, we are talking about Windsor Framework. So Windsor Framework is trying to डू अवे विद दिस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा विंडसर एग्रीमेंट के अंदर। सो सपोज हियर यू हैव ग्रेट ब्रिटेन, हियर यू हैव ग्रेट ब्रिटेन, देन हियर यू हैव आयरलैंड, ठीक है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंदर क्या था कि दैट नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज हियर, so any goods which is coming from Great Britain and which is destined to go to Ireland, it has to follow the EU customs rule. Now the new thing over here is now they are creating two lanes, okay, green lanes and red lanes, okay, to bypass the EU customs rule, that is the part of Windsor Agreement. Now the next is Good Friday Agreement. So Good Friday Agreement ये 1998 का agreement है, Good Friday Agreement 1998. So this is the agreement which came into effect on Good Friday, and it replaces the hard border between the Northern Ireland and Republic of Ireland into soft border. The next is from climate change. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्मॉलर आइलैंड्स जो हैं, smaller islands, now they are approaching International Court of Justice and International Tribunal on Law of Seas related to climate change impact. तो आप हम जानते ही हैं कि जो small island nations हैं, they are at more risk due to rising sea level and climate change. So there are a group of 16 countries led by Vanuatu which have approached the International Court of Justice, okay, for advisory opinion on climate change related issues or on the issue of climate
चेंज। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो टाइप के इश्यूज होती है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील करती है। एक तो होता है कंटेंशियस, एक तो होता है एडवाइजरी। कंटेंशियस का मतलब द रिजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या कोई भी स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन का, व्हेन दे रिक्वेस्ट द आईसीजे फॉर एन ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वी ऑलरेडी हैव सर्टेन इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी, like we have United Nation Convention, Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement. Okay, then we recently had 27th COP, Conference of Party, which was held in Sharm el Sheikh in Egypt. तो उसके बाद भी why the small island nations they are approaching the ICJ? तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो the recently concluded 27th United Nations Climate Change Conference of Party COP27, which was organized in Sharm el Sheikh, okay, which was organized in Sharm el Sheikh in Egypt, where countries failed to narrow their differences on critical issues such as reducing greenhouse gas emission, which exemplifies the failure of the international community to act together on the issue of climate change. So that's why these countries are approaching the International Court of Justice. Okay, now see what are the questions in the resolutions. So first are the international law obligations of countries towards the protection of climate system from anthropogenic emissions of greenhouse gases for the present and future generation. This is the first question in the resolution by Vanuatu. Fine. So यहाँ पे क्या होगा कि जो ICG है, it will not only interpret and clarify the existing international climate change law, but it will also give the customary international, it will also rely on customary international law to fill the gap in this treaty. Okay, the next is what are the legal consequences of states that have caused significant harm to the climate change. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कि जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं विच हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट हार्म टू क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे फिक्स की जाएगी, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस दैट ईच स्टेट हैज टू पे विच हैव हार्म द क्लाइमेट चेंज. Then there is a long standing demand for climate repatriations, that is the rich countries which have historically emitted maximum greenhouse gas emissions, how they should compensate the developing countries. Okay, these are the questions which have been raised. The next is about the sea. तो हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इज राइजिंग, देयर इज ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन वार्मिंग, which are harming this small island nations. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है that जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज है, it has been requested to determine the specific obligations of countries under the United Nations Convention on the Law of Sea related to preventing, controlling and reducing the pollution in the marine environment. Right? And now see what is the way out, how we can help the small and developing countries. तो जो international forums हैं like G20 हो गया, then developed countries, they should support these initiatives of the small island states. Okay, and then we should focus on certain initiatives like LIFE, that is environment, which is environment friendly lifestyle campaign to avoid the crisis of climate change. Now India should stick to the middle part in the new world disorder. So let me give you the gist of this text and context. So it is talking about changing world order. ठीक है, फाइन. तो अभी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर वाज कोल्ड वॉर. तो जो कोल्ड वॉर का पीरियड है, वी कॉल इट द पीरियड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी का मतलब कि यहाँ पे जो वर्ल्ड था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंप, वन लेड बाय यूएसएसआर, नेक्स्ट लेड बाय यूएसए. उसके बाद यूएसएसआर इट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 एंड देन देयर वाज द हेजोमोनी ऑफ यूएसए, देन वी कॉल इट एज यूनिपोलर वर्ल्ड. उसके बाद अगर आप देखोगे कि देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स लाइक withdrawal of USA from Afghanistan, ठीक है, and Russia-Ukraine crisis, which has seen the increasing assertiveness of Russia and China. So again, we can see that in 2022, since 2022, the world is now again in a change. तो यहाँ पे इंडिया का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे कि when Cold War started, India along with other countries, okay, like Egypt, Yugoslavia, Indonesia, it started a movement called as non-aligned movement. Non-aligned movement, it was launched to help the newly independent countries to have their own independent foreign policy, and they should not be joining any
camps. Okay, then if you will see, it was established after CENTO, that is Central Treaty Organization was established and Southeast Asia Treaty Organization was established. उसके बाद अगर आप देखेंगे that कोल्ड वॉर के समय India did not have any hostile relations with any of the superpowers. Fine, but today after the Russia-Ukraine crisis, there is a pressure on India to go against the Russia, but India has withstood that pressure. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो चाइना है, ठीक है ना, उसने देखो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया. तो अगर आप देखेंगे कि दैट चाइना जो है, द सोवियत यूनियन वाज चाइनाज आइडियोलॉजिकल ब्रदर एंड नेबर, बट चाइना डिड नॉट वांट टू प्ले सेकंड फिडल टू द सोवियत. ठीक है ना, तो चाइना का भी ये पोजीशन था कि चाइना को भी एक अपना इंडिपेंडेंट पाथ जो है वो परस्यू करना था. तो उसने क्या किया, दैट इट ब्रोक अवे विद द सोवियत कम्युनिस्ट फोल्ड एंड बिल्ट अ क्वाजी अलायंस विद यूएस एंड हेल्प द इंपीरियलिस्ट ब्लॉक डिफीट द सोवियत कम्युनिस्ट. उसके बाद इट एक्वायर्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर एंड चाइना स्टार्टेड ग्रेजुअली चैलेंजिंग द यूएस व्हिच हैज लेड टू टुडेज ओपन कॉन्टेस्ट. फाइन, तो अब इंडिया को भी क्या है कि इंडियाज प्राइमरी फोकस शुड नाउ बी transforming itself economically and militarily. It should stay focused on its rise and bridging the gap with China, and it should present itself as a natural stabilizing power in South Asia and Indian Ocean region. अगर आज हम देखें तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक चाइना नहीं रह गया है. अगर आप देखेंगे कि आफ्टर द रिटर्न ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, तो एक सिक्योरिटी इशू जो है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इशू, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस. Then India has to work with Russia and Iran, both which are at the odd with US. So India should not abandon the strategic autonomy and should not join the US-led bloc. The next is the today on 1st March 1872, Yellowstone National Park, ठीक है ना, Yellowstone National Park, okay, was declared as the world's first national park, okay, which was established in US. तो यहाँ पे आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, दैट विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. नाउ सी, न्यू दिल्ली वेलकम्स फॉरेन मिनिस्टर्स फॉर G20 मीटिंग amid negotiations over agenda. So here the important thing is that we have to wait for the outcome of this G20 meeting. But the G20 foreign ministers meeting is going to start from tomorrow. That is called as foreign ministers meeting. Okay. So the negotiations, okay, it was held online last week. It was led on Monday evening by G20 South Sherpa Abhay Thakur and his counterparts from G20 countries. So there will be two sessions, okay. So the first session, it will focus on strengthening multilateralism and need for reforms, food and energy security and development cooperation. And the second will focus on counter-terrorism, new and emerging threats, global skill mapping, talent pool and humanitarian assistance and disaster resilience. The next is Chandrayaan-3. ISRO successful in key test for India's third moon mission. So see, Chandrayaan-3, it is India's third moon mission and is follow-on mission to Chandrayaan-2 to demonstrate end-to-end capability in state landing and roving on lunar surface. So it was slated to be launched this year by launch vehicle Mark 3 from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. तो यहाँ पे इसरो ने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज Flight Acceptance Hot Test of CE-20 Cryogenic Engine. That will be the upper stage of LVM-3 launch vehicle for Chandrayaan-3. Now, one-liner question: proton beam therapy is used for the treatment of which of the following disease? So the answer is cancer. तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. पहली बात तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह ये फैसिलिटी है, वो भी अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में है. उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एम्स में एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्लान बनाया था उसको अभी के लिए उसको स्टॉप किया है, दैट इज इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस झज्जर. बट देयर इज नाउ ह्यूज अनमेट नीड फॉर एक्सेस टू दिस ट्रीटमेंट. द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इट रन्स इन लैक्स. ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट देयर आर 42 PBT मशीन इंस्टॉलेशंस इन द US, फॉलोड बाय यूरोप वेयर इट इज 35, जापान 26, चाइना 7, ताइवान 3, साउथ कोरिया 2, बट इंडिया हैज ओनली 1. ठीक है, तो अपोलो चेन्नई इट हैज़ इम्पोर्टेड दिस मशीन फ्रॉम फ्रांस बेस्ड आयन बीम एप्लीकेशंस एंड अदर कंपनीज लाइक जापानीज MNC हिटाची एंड US बेस्ड वेरियन मेडिकल सिस्टम्स मैन्युफैक्चर द हाई एंड एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैप्शन. नाउ सी, one liner again, in Iran endangered Asiatic cheetah cub dies at 10 months. So you can see that Iran's only Asiatic cheetah cub died despite days of treatment for kidney failure. Okay, इसका नाम था Piroz. Then Hong Kong scraps one of world's last COVID-19 mask mandates.
So यहाँ पे this is also one liner that recently which country or which region scrapped the COVID-19 mask mandate. So it was Hong Kong. Now coming to core sector from economy, core sector output rose to a 10-month high in January. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे that output growth in India's 8 core sector hit a 4-month high of 7.8% in January from 7% in December 2022. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे that अगर आप देखेंगे that fertilizer, okay, it gained 7.9% year on year basis. Coal output it also rose, electricity production it also increased, and 7 of the 8 sectors posted growth for second straight month. Crude oil output shrank yet again. This is important. अब देखिए इंडिया के जो कोर सेक्टर्स होती है, ओके, विच इज अबाउट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है, तो इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं. इट इज क्रूड, कोल, then petroleum refinery products, natural gas, then steel, electricity, cement, fertilizers. These are India's 8 core sector which constitutes about 40.27%. Okay, 40.27% of index of industrial production. अब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अगेन एनएसओ रिलीज करती है. इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इन इंडिया. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.